पीसीआर मेथड को हमने अभी तक डिस्कस किया है टू एम्पलीफाई द डीएनए फ्रेगमेंट। अगर हम पीसीआर की एप्लीकेशन के हवाले से बात करें तो दिस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज बेसिकली अ मेथड। इसके लिए जो हम इक्विपमेंट या मशीन यूज़ करते हैं उसको हम थर्मोसाइक्लर कहते हैं। विद द एडवांसमेंट इन द साइंस पीसीआर को हमने कई जगहों पे यूज़ किया, कई फील्ड्स में यूज़ किया और अकॉर्डिंगली इसमें डिफरेंट किस्म की वेरिएशंस आती गई। अगर हम टाइप्स के हवाले से बात करें तो हमें दो टाइप्स का पीसीआर जो है वो लेके आगे चल सकते हैं। वन इज़ द कन्वेंशनल पीसीआर, द सेकेंड वन इज़ द क्वांटिटेटिव पीसीआर और रियल टाइम पीसीआर। अब इन दोनों मेथड्स में डिफरेंस क्या है कि कन्वेंशनल पीसीआर में जो रिजल्ट्स हैं उनका हम आइडिया या उनकी ऑब्जर्वेशन पीसीआर ख़त्म होने के बाद पीसीआर प्रोडक्ट को एनालाइज करके ले सकते हैं। जो रियल टाइम पीसीआर है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एम्प्लीफिकेशन वी कैन सी इफ द एम्प्लीफिकेशन इज ऑनगोइंग और नॉट, and then by this method we can even determine the number of DNA molecule in a given sample or after amplification in that sample. Keeping in view this type of the template, we have three types of PCR. Standard PCR, in which we can amplify the DNA. Then RT-PCR, which is called as reverse transcriptase PCR, in which we can study the RNA as a template. Then real-time PCR or RT-qPCR. The Q stands for quantitative, that we can quantify our DNA sample. In real-time qPCR, we can use DNA as well as RNA as a template or as a sample of study. Standard PCR और द कन्वेंशनल पीसीआर में हमारे पास कई किस्म के वेरिएंट्स मौजूद हैं डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ स्टडी वी आर गोइंग टू मेक और कौन से प्राइमर के सेट हम उसमें यूज़ करने जा रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी हैव स्टैंडर्ड, नेस्टेड, मल्टीप्लेक्स, रैप्ड एंड लॉन्ग डीएनए पीसीआर। स्टैंडर्ड पीसीआर जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं, इट इज़ यूज्ड टू एम्पलीफाई द डीएनए और इसकी कंपोजिशन किसी भी रिएक्शन मिक्सचर की वही है जिसमें प्राइमर, टेम्पलेट डीएनए, डीएनटीपीज, एंजाइम और कैटाइन इसको यूज़ करते हुए एम्पलीफाई करते हैं। आफ्टर द एम्पलीफिकेशन और कंप्लीशन ऑफ द पीसीआर वी डू द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड द रिजल्ट इज विजिबल इन द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वेदर द स्पेसिफिक बैंड हैज़ बीन एम्पलीफाइड और नॉट। इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि हमारे चारों सैंपल्स में एम्प्लीफिकेशन हुई है और ये जो हमारे पास मार्कर है उससे हम इस एम्प्लीफाइड प्रोडक्ट का वेट, मॉलिक्यूलर वेट डिटरमिन कर सकते हैं। नेस्टेड पीसीआर जो है इसमें और प्रीवियस जो हमने डिस्कस किया एक पीसीआर स्टैंडर्ड, उसमें डिफरेंस ये है कि नेस्टेड पीसीआर में हम दो सेट प्राइमर्स के यूज़ करते हैं। दो सेट यूज़ करने से फ़ायदा ये होता है कि नॉन स्पेसिफिक एम्प्लीफिकेशन को रूल आउट कर दिया जाता है। इन दिस केस द फर्स्ट प्राइमर सेट is used to amplify the template और जो सेकेंड प्राइमर सेट जो सेकेंड साइकिल से फंक्शनल होता है that is going to amplify the product from the first cycle, and the second primer is designed within the segment of DNA which is obtained from the first cycle of the PCR. This is called as nested PCR because we collectively used two pairs of primers. Then we have multiplex PCR, as the name indicates, multi. इसमें हम कई प्राइमर्स के पेयर्स यूज करते हैं और इसमें पर्पस इज टू डिटेक्ट द डिलीशन, duplication in a larger gene. In this case, we amplify the genomic DNA using many primers, and if all the primers work, then we get the amplified products of variants, and the analysis of these amplified products can tell us if there is any mutation, any deletion, any duplication in that particular part of the DNA or gene. The next method is known as RAPD, RAPD, which is abbreviated for Random Amplified
polymorphic DNA. This is another modification of conventional PCR in which we create the primers at random with 8 to 12 nucleotide length, and then we proceed for amplification of the larger template genomic DNA. अब इस केस में annealing temperature हम बहुत low रखते हैं so that the primers can bind randomly at different regions of the genome and amplification is visible. In this case, in a single sample, we will get number of amplified products, but these are non-specific. The specificity is not there because of less annealing temperature. In case if we have to amplify the larger DNA fragment more than up to 27 kilobases, then we use a method of long PCR. The long PCR varies from the conventional PCR in the use of enzyme. Previous methods, they used only thermostable Taq polymerase, but in case of long PCR, we have to use another enzyme that have the proofreading ability. Because when we talk about amplification of the longer fragments, the chances of error are there, and if the chances of error are there, errors are accommodated in the daughter molecules, then in subsequent amplification will not be as consistent from the parental strand. Therefore, proofreading enzyme is also used in combination with the Taq polymerase in long PCR. These methods were used for DNA as a template. In case if we have to study RNA or precisely mRNA, then we use a method which is called as reverse transcriptase PCR. As the name indicates, the RNA, mRNA has to be reverse transcribed into a single stranded cDNA, and then that cDNA is going to be used as a template. This picture shows that the first step is the use of a primer, which is going to give you a single stranded cDNA. The primer subsequently designed for this single stranded DNA will amplify the product. The amount of the cDNA amplification is related to the amount of initially present messenger RNA. The higher is the number of mRNA molecules, the higher will be the product or the cDNA molecules amplified. In case if we want to study the real time during the process, whether the amplification is ongoing or not, we use RT-qPCR, which gives us quantity as well as we monitor the process during the reaction. In this case, we use a non-specific fluorescent tag which is named as cyber green. This cyber green intercalates with the DNA, and if the DNA is amplifying, more and more cyber green is intercalated in the DNA, and we detect the signal at some specific cycle. That cycle, when this signal is detected, is referred as threshold cycle, and after that cycle, the amplification of DNA can be observed in the exponential form. This exponential increase in DNA amplification is going to be recorded during the process. That is the reason we call it as the real-time PCR. This figure shows you the number of samples which amplify at different cycle numbers, and this amplification or the cycle number when the threshold is achieved tells us that how many RNA or DNA molecules were present at the start of the reaction.